Hi guys, today we are going to learn about the new method, that is conjugate beam method. One of the method to find out the slope and deflection for the beams. Okay, let us take what do you mean by the conjugate beam. Obviously we have learned the method, that is slope deflection method. We have learned the moment area method, then Macaulay's method, double integration method. Okay. Similarly, the conjugate beam method, it is also one of the geometric method in which we will going to use the M upon EI diagram. Let us see about the conjugate beam. Okay, obviously we should know about the what do you mean by the conjugate beam. A conjugate beam, it is nothing but one of the imaginary beam. Obviously इसको हम लोग थोड़ा imagine करने वाले हैं, in which जिस बीम में M upon EI एरिया और वी कैन से M upon EI डायग्राम हम लोग जो निकालने वाले हैं ऑफ द रियल बीम, जो रियल बीम रहेगा उसका एक्ट एज ए लोडिंग, दैट इज वॉट एवर एम अपॉन ई आई डायग्राम हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे इट विल बिहेव एज ए लोडिंग इन द कॉन्जुगेट बीम. Okay, let us take one of the example if you want. We have considered the one of the simply supported beam in which one central load is applied at the beam, that is real beam. So if we consider the conjugate beam, then for the conjugate beam, obviously for the central point load we can draw the triangle having the maximum value, that is WL divided by 4 as a maximum bending moment. So M upon EI डायग्राम के लिए अपने को यहाँ पे EI से डिवाइड करना पड़ेगा. So this triangular whatever M upon EI diagram, it will behave as a loading on this imaginary beam. Okay, in the same way whatever the support reactions जो रहेंगे वो भी चेंज होने वाले हैं, but for the simply supported beam वो सेम ही रहेंगे. So this is the real beam, it will be converted in the conjugate beam. Okay, it is one of the smallest example. So for the support we can say support reactions or we can say support conditions, we have formulated one table in which we can observe how it is going to change from the real beam to the conjugate beam. If in the real beam there is a hinge support, that is end hinge support, not intermediate. Okay, so if there is hinge support, then it will change into the roller support in conjugate beam. The same way, if there is roller support, then it will change into the hinge support. If there is end fixed support, then it will change into the free support. That is, if there are 3 reactions is acting, then in the conjugate beam there will be 0 reactions. Third one, similarly, if there is a free support, then it will change into the fixed support. Fourth one, if there is internal hinge in the real beam, obviously there may be chances there will be internal hinge, then it will change into the intermediate roller support, or we can say intermediate hinge support. Both are the same. Fifth one, if there is a roller support, intermediate roller support, then it will change into the internal hinge, that is intermediate internal hinge. Whatever they can interchange depending on the support conditions. These are the main table. After that, we have to take the step-by-step procedure involved into the conjugate beam method. The very simple first method is nothing but, first step is nothing but draw the M upon EI diagram. Similar way which we have drawn in this moment area method, because we have to consider the total area, actual total area जो अपने को consider करना. तो वॉट एवर मोमेंट एरिया मेथड में हम लोगों ने सीखा है उसी तरह से यहाँ पे M upon EI डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे. In the step number 2, we will form the conjugate beam. Obviously, if you get the M upon EI diagram, we will take that M upon EI diagram as a loading for the conjugate beam, and the support reaction will vary depending on that table, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि support कैसे change होगा. After changing that support and M upon EI diagram as a loading, we will form the conjugate beam. Then step number 3 will be analyze the conjugate beam. मीन्स वॉट एवर कॉन्जुगेट बीम हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया है विद द लोडिंग, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे. वी विल फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस फॉर दैट बीम. सो इट इज़ नथिंग बट द एनालिसिस. देन देर आर 2 रूल्स, दैट इज़ नथिंग बट फर्स्ट वन इफ यू सीन, दैट इज़, देखो ये 2 रूल जो रहेंगे, इट विल बी फॉर टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन द कॉन्जुगेट बीम, और वी कैन से इन द रियल बीम. सो फर्स्ट रूल क्या कहता है, the shear force in the conjugate beam. Obviously conjugate beam को हम लोगों ने analyze किया, so we can find out the shear force at any point. The shear force in conjugate beam will represent the slope at that point in the real beam. Means shear force in conjugate beam जो हम लोग find out करेंगे
दैट वैल्यू इज़ नथिंग बट द स्लोप एट द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोगों ने शेयर फोर्स फाइंड आउट किया था, स्लोप एट दैट सेम पॉइंट इन द रियल बीम। मीन्स रियल बीम में जो अपना स्लोप रहेगा वही तुम लोगों का शेयर फोर्स रहेगा इन द कॉन्जुगेट बीम। In the same way, second rule is nothing but bending moment at a point in the conjugate beam will represent the deflection at that point in the real beam. मीन्स जहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है रियल बीम में, जो एक्चुअल बीम है उसमें, वहाँ पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। कौन से बीम में? कॉन्जुगेट बीम। जो कॉन्जुगेट बीम हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया है विद द सेम रूल्स, जो हम लोगों ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए एक्चुअल रूल्स है, वही हम लोग रूल्स यहाँ पे फॉलो करेंगे और फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन। ओके, सो इफ फ्रॉम दिस वी विल गोइंग टू फाइंड आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द conjugate beam method.